बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स के ऊपर। पहले लेक्चर में हमने देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसकी बेसिक्स को। जो बेसिक डेफिनेशंस हमने देखी कल, उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, what is the linearity of the different partial differential equations. So we discuss in detail the linear differential equations and non-linear differential equations and quasi-linear and semi-linear as well. Then we discussed the homogeneous partial differential equations in yesterday talk, in yesterday lecture, and then we discussed the solution of partial differential equations, and फिर हमने एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो सोल्यूशन हो रिलेटेड इक्वेशंस के, लेट्स से u1 and u2 are the two solutions of a differential equation, then the linear combination of those two solution is again a solution of that partial differential equations. So अब today's lecture में हम बाउंड्री एंड इनिशियल वैल्यू कंडीशंस और फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर पढ़ेंगे। तो इसके लिए व्हाट इज़ द मोटिवेशन, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं डिफरेंशियल इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस को। जैसे कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया और तो उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस थे, लाइक एक से ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। सो वी कैन से दैट इन दिस वे दैट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फॉर ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर इन्फिनिट, मे बी 2, मे बी 3 और मे बी मच मोर, एंड also the boundaries of the regions of the independent variables over which we desire to solve the differential equations are not discrete points as in one dimensional case, but in partial differential equations we always take the two-dimensional case, for example in x direction and in y direction. So in this case our boundaries are not the discrete points but our continuous curves are surfaces. This is another reason to learn about the initial and boundary conditions, and also thus the complete formulation of a physical system in terms of partial differential equations requires careful attention. Not only the equation that govern the system, like we हमें तवज्जो तो देनी है जो अपनी equations हम मॉडल करने जा रहे हैं। हमारी इक्वेशंस जो हम मॉडल कर रहे हैं वो तो बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो फार्मूलेशन है बाउंड्री कंडीशंस की वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यानी हमारी जो सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम, जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो फिर हमें इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। द फर्स्ट थिंग इज द फार्मूलेशन ऑफ गवर्निंग इक्वेशंस, जो हम इक्वेशंस हम फार्मूलेट कर रहे हैं, and the other one is the correct formulation of boundary conditions. Furthermore, most differential equations that we encounter in applications are mathematical expressions of physical law. Yes, for example, heat equation. The heat equation is the expression of the law of energy conservation. So in order to obtain a unique solution, which we discussed yesterday lecture, what is unique solution? Therefore, in order to obtain a unique solution, we must specify the initial conditions in addition to the boundary conditions. यानी हमें एक यूनिक सोल्यूशन के लिए अपनी इनिशियल कंडीशंस और अपनी बाउंड्री कंडीशंस दोनों का ख्याल रखना है और उन दोनों को बेहतर अंदाज से फार्मूलेट करना है और प्रॉब्लम पे अप्लाई करना है। दिस मीन्स कि आज का जो लेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जब हम मॉडलिंग करेंगे किसी भी फिजिकल सिस्टम की, तो उसमें हमें हमेशा बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे बात की इनिशियल कंडीशंस की और बाउंड्री कंडीशंस की, तो इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं। इससे पहले कि मैं इनिशियल कंडीशंस के ऊपर जाऊँ, मैं आपको टुडेज़ लेक्चर है इसकी आउटलाइन दे देता हूँ।
कि उसकी आउटलाइन ये है कि सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स मे बी 1 or 2 एग्जांपल्स, देन बाउंड्री कंडीशंस, देन सॉल्यूशन ऑफ अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम which is very important because almost all physical problems which are they are boundary value problems. So the solution of a boundary value problem is very important in this sense. Then we will discuss the linearity of the boundary conditions, that our boundary conditions must be linear, or if they are non-linear, then what happened. So the and then boundary conditions are classified into 3 different types, and the first type, it is the Dirichlet conditions, the second one is Neumann condition, and the third one is mixed boundary conditions or Robins boundary conditions. Then we will discuss the superposition principle for the boundary conditions, and then formation of partial differential equations, like because after this discussion of initial and boundary conditions, we will convert our attention to the next topic, that is how we formulate a partial differential equation. So now coming to the first section, that is initial condition definition. The definition of initial condition is that conditions at an initial time, let's say we take this definition for the time when our independent variable is time, at an initial time t is equal to t naught, from which a given set of mathematical equations or physical system evolves, are known as initial conditions. So the system with initial conditions specified is known as the initial value problem. Alternatively, if the conditions relates in more simple way, if the conditions relates one value of the independent variable, such as u of x naught is equal to a, let's say at x naught the dependent variable u has value a, and at x naught the derivative of u with respect to x has value b, then these conditions are called initial conditions, and x naught is called the initial point. Let's say in an example, it's a very simple example. We suppose that our unknown function u is dependent on one variable x. I am taking only one dimensional case just to idea of the initial condition. Then the following problem is known as initial value problem. In this you can see that we have a differential equation where u has the double derivative and the second term has single derivative, and then u of 0 is equal to 3. This means at x is equal to 0 the value of u is 3, and at x is equal to 0 the derivative of u, that u of x, is equal to 7. Let's say from physical example, like if my displacement at time t is equal to 0, my displacement is my velocity at time t is equal to 0 is 10, then v of 0 is equal to 10, and at time t is equal to 0, if my displacement x is equal to 20, then I can see that x of 0 is equal to 20, and x dx by dt of 0 is equal to 10. Dx by dt is basically the velocity. So in this way you can imagine that how important these initial conditions are. In the second example, I take u as a dependent variable, and which is dependent on two variables t and x. Then the following problem is known as initial value problem. The same equation I took, and u of not the same. Here you can see that the first term is double derivative of x, and the second term is the derivative of t minus 2u is equal to 0. Then u of 0x is equal to 3x, and u of t 0 of x is equal to sin x. So आप यहाँ देख सकते हो कि इस सेकंड कंडीशन में आपकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो फंक्शन ऑफ x है. सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज आपका जो इनिशियल कंडीशन हम देख रहे हैं टाइम के रेफरेंस से, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर
आपका लेट्स से u इज लेट्स से यहाँ पर u हमारा डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहा है इन फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 3h है और आपकी वेलोसिटी ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट को आप जब डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी विद व्हेन यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ h with respect to time t, then it becomes velocity. So here you can see that the velocity of that system, that u of t is equal to sine of h. So these are called initial conditions. Now come to the next topic, boundary conditions. What are boundary conditions? The set of conditions, boundary conditions are the set of conditions specified for the behavior of the solution to a set of differential equations or partial differential equations, especially at the boundary of its domain, are known as boundary conditions. Like the conditions which are specified on the boundary of the region where we are going to model our problem, then of course that is some region D. Then on the boundary of that region we have some kind of conditions, तो उन conditions को हम boundary conditions कहेंगे. A system with boundary condition is known as the boundary value problem. Alternatively, it's just to know about the in one-dimensional case, another definition, that the problem of finding the solution of a differential equation such that all the associated conditions relate to two different values of the independent variable is called a boundary value problem. Like two different values of independent variable, like at x is equal to a, let's say, and at x is equal to b. In initial conditions, you can see that we are bound to take at x is equal to 0 or x is equal to x naught on only one point. But here in boundary conditions, our variable has two values, two different values, of course. In example, the same example I choose, but I say that if u of xt is the displacement of a vibrating string and its ends are fixed at x is equal to a and x is equal to b, then the conditions u of at is equal to 0 and u of bt is equal to 0. So are boundary conditions. Like it's a string problem which is like आपने एक धागा स्ट्रिंग ली हुई है, आपने उसको बांधा हुआ है एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी के ऊपर, आप उसको वाइब्रेट करते हो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि आप एट एक्स इज इक्वल टू ए इनिशियल पॉइंट के ऊपर और उससे फाइनल पॉइंट के ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप इसको कहते हो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस. द सॉल्यूशन ऑफ अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. By a solution to a boundary value problem on an open region D, we mean a function u that satisfies the differential equation on D and it is continuous on D union delta D and satisfies the specified boundary conditions on delta D. Delta D is the boundary of the region D. We call here D, delta D is the boundary of the region D. So what does it mean? That the solution of a boundary value problem, we must say a function u is a solution of the boundary value problem when u satisfies the differential equation within D or on D and it is continuous up to the boundary. Of course, if it is a solution then it is continuous in D, but ये ज़रूरी नहीं है u के लिए कि वो डेल्टा D के ऊपर बी वो सेटिस्फाई करे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, यानी डेल्टा डी के ऊपर यू को सिर्फ कंटिन्यूस होना जरूरी है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है डी यूनियन डेल्टा डी. दिस मींस डी के ऊपर तो वो कंटिन्यूस है ही है, लेकिन आपने उसकी कंटिन्यूटी अप टू डेल्टा डी चेक करनी है एंड सेटिस्फाइज द स्पेसिफाइड बाउंड्री कंडीशन. ऑफ कोर्स जो आपका फिजिकल सिस्टम आपको बाउंड्री कंडीशंस दे रहा है, उन बाउंड्री कंडीशंस को उसने सेटिस्फाई भी करना है उस u ने. So this is the solution of a boundary value problem. So in the next slide we will discuss about the linear boundary conditions. The linear boundary conditions
The boundary conditions are linear if they express a linear relationship between u and its partial derivatives up to appropriate order on delta D. In other words, a boundary condition is linear if it is expressed as a linear equation between u and its derivatives on delta D. So the linearity, the concept of linearity is same as we discussed in the last lecture for the concept of linearity in partial differential equations. So here I repeat it again, that the boundary conditions are linear if they express a linear relationship, and we know what is a linear relationship. We discussed in the previous lecture about the linear operator, and which tells us what is a linear relationship between u and its partial derivatives up to appropriate order on delta D. On delta D means on the boundary of that region. In other words, a boundary condition is linear if it is expressed as a linear equation between u and its derivatives on delta D. Now, there are three major types of boundary conditions. Now come to the first type, which is Dirichlet condition. Dirichlet is a mathematician, and after his name these conditions are known as Dirichlet conditions. In Dirichlet conditions, we know that the boundary conditions specify the values of the unknown function u on the boundary. The values of unknown function u, when we specify the values of unknown function u on the boundary, then this type of boundary condition is called the Dirichlet conditions. Only value of u, there is no derivative of u, simple u. Let's say in previous example you saw that I wrote u of 0t and u of at x is equal to a or x is equal to 0. We have some functional value, and these are called Dirichlet conditions. I will explain in later on the one example in detail, which clarifies these three conditions. The second one is Neumann condition. Neumann is again a mathematician, and he said that the boundary conditions specify the derivatives of the unknown function u, the derivative of the unknown function. In the Dirichlet conditions we have only u, but in Neumann conditions we have the derivatives of the unknown function u in the direction normal to the boundary. And what is the derivative of the unknown function u in the direction normal to the boundary? I will explain. Yes, I think maybe you don't know, which is written as partial u by partial n. This type of boundary conditions is called the Neumann condition. So the normal derivative on boundary delta u by delta n is defined as, let's say n is your normal vector, and you know that what is the normal vector. Okay, so in the direction of this normal vector, if I take the derivative of u, then this formula is from basic calculus. You know that partial u by partial n is equal to gradient u dot n. Here I wrote n bold n because this is a notation for vector, and gradient of u is again a vector. And in the previous lecture you see that what is gradient of u, that is just partial u by partial x1, and if I have xn independent variables, then I can write partial u by partial x1, partial u by partial x2 up to partial u by partial xn, and in most physical problem it is n is equal to 2 or 3. And this dot is basically scalar product with n. So this is a scalar product of gradient of u, scalar product with the normal vector n, where n is the outward normal to the delta D, to the boundary. This is outward normal. So these are the Neumann conditions. Then the people think that if we have Dirichlet conditions which consist only on u, and if we have Neumann conditions which consist the derivative of u only, then there are several physical problems which I discuss later, that where on the boundary हमारे पास दोनों होते हैं,
यू बी और पार्शियल यू बाई पार्शियल एन बी, यानी दोनों डेरिवेटिव हमारे पार्शियल यू बाई पार्शियल एन बी होते हैं और यू बी दोनों टाइम्स हमारे पास होती हैं। तो तब हम क्या करें, देन हम इनको मिक्स कर लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस और रॉबिन्स बाउंड्री कंडीशंस, यानी इनके दो नाम है, दोनों में से कोई एक भी हो तो इट्स ओके। सो द मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस, the boundary conditions specify a linear relationship between u and its normal derivative on the boundary. These are referred to as mixed boundary conditions or Robbins boundary conditions. The general form of such a boundary condition is alpha u plus beta delta u over a partial u by partial n. N is again a vector here, and this is whole boundary conditions are well defined on delta d is equal to f of x is a function depending on x on delta d, alpha beta are constants. So here you can see that alpha u, this if I take beta is equal to 0, then this is Dirichlet condition, and if alpha is equal to 0, then this is Newman condition. So now I am adding these two, तो इन दोनों को जमा करूँगा तो मेरे पास mixed boundary conditions आ जाएंगे। So example, now मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इंसुलेटेड रॉड की, जो इन तीनों इक्वेशन बाउंड्री कंडीशंस को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करेगी। तो इन दिस एग्जाम्पल वी कंसिडर द हीट कंडक्शन, द प्रॉब्लम ऑफ हीट कंडक्शन in a laterally insulated thin wire u of ht. Then let's say u of ht is the temperature in the wire, where t is the time and h is the displacement. The constant k is the diffusivity, and which indicates the rate of diffusion of the heat along the wire, and the length of the wire is L. So the initial condition is u of h0 is equal to f of h when t is equal to 0. The initial condition always comes when t is equal to 0, or we specify the time at certain point, where f of x is the initial temperature distribution in the wire. F of x is the when at time t is equal to 0, capital F of x is the temperature of the initial temperature of the wire. So here this is the wire, and we are going to insulate this. So the initial temperature at time t is equal to 0, the temperature of this wire is f of x. The three major types of boundary conditions are as follows. In next slides, you see immerse the wire. Let's say we put melting ice at each end points in this way, ice here and ice is here. Then and let u of ht be measured in degrees centigrade. Then u of 0t means at h is equal to 0, and u of lt in the end point, here is the initial point at h is equal to 0, and this is the end point. And since you see that we put here ice, so of course for ice the temperature must be 0 degrees centigrade. So at initial point u of 0t, the temperature is 0, and for the final point again we put ice here, so the temperature is again 0, u of lt, for t is greater than 0. So these are, you see that we on the boundary we have the condition u of 0t is equal to 0 and u of lt is equal to 0, and these are Dirichlet or fixed boundary conditions. Alternatively, prescribe the temperature of each end point to be, let's say we don't put ice here, so in this point the temperature is P of t, and at this point the temperature is Q of t respectively. Then u of 0t is equal to P of t, because we say that we don't have a ice here, no more ice here, so this means there is some temperature here, and we name the temperature as P of t. So at h is equal to 0, the temperature of the wire is P of t, and at h is equal to L, the temperature of the wire is Q of t, for t is positive, for t is greater than 0. These are also
known as Dirichlet or fixed boundary condition. The same thing, because either u is equal to 0 or u is equal to some function of t or constant, but we are talking only about u. We are not talking the derivative of u. Okay, so these are called the Dirichlet boundary conditions. In the second example, we insulate each endpoint. There is some kind of insulation here. Thus the wire is totally insulated as seen in the figure. Then insulated means no heat is going outside this wire. We just insulate this wire from both ends. So at u, the total flux, partial u by partial t, basically the total flux of the this is not the partial u by partial t, but this is partial u by partial n 0 t, and this is u at the partial u by partial n L of t, and but we write in this way. So this is again 0, because on the initial point at h is equal to 0 and at h is equal to L, our heat flux is 0 because it is totally insulated wire. So these are Newman conditions, or boundary are free boundary conditions. Alternatively, prescribe the flow of heat at each endpoint to be P of t. Let's say here the flow of heat is P of t and Q of t respectively. Here there is no flow of heat outside from this point, and there is no heat outside from this point. But now if we consider that the heat is going from this point is P of t and from this point is Q of t respectively, then the Newman conditions are u of h 0 t is equal to minus P of t over k, and u of h L of t minus Q of t over k for t is greater than 0. K is greater than 0 is the thermal conductivity. These also are Newman or free boundary conditions. So here only the derivative of u involved with respect to the normal derivative, and each endpoint is exposed and radiates. Let's say in the third example, each endpoint is exposed and radiates heat into the surrounding medium, which has a temperature of T of t. Like this is poor insulation. The heat is going from in this way to the temperature. So let's say the T of t is the temperature of the outside medium or the surrounding medium, which has a temperature of T of t. So the total flux of at this point beta u of 0 t is equal to alpha u of 0 t minus T of t, and delta u at L of t is equal to minus gamma u at L of t minus T of t for t is greater than 0. So what does this equation means? That the total flux of the heat, like outgoing heat, is equal to the heat at this point minus the temperature of the surrounding medium. So simplifying this, I should take this here and taking this into the other side. So this equation simplifies to alpha u of 0 t minus beta u at 0 of t is equal to alpha t of t and gamma u L of t plus delta u of h L of t is equal to gamma T of t for t is greater than 0, where alpha, beta, gamma are positive constants. These are Robin or mixed boundary conditions. Here I again write in UH, here it is UH, but in this example which in this definition I am doing back, I said that, no, this one, this is the derivative with respect to n, but I am taking only one dimensional case here, only h. So un, the partial u by partial n is exactly equal to u h of t. So I can write this thing u of h, u h of 0 t or u h of L t. So I am here, I am just telling, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज न करें कि ये तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है. बेसिकली ये हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है यहाँ पर. दिस वेरिएबल इज रिलेटेड टू टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल, स्पेस का वेरिएबल सिर्फ एक है और वो x है.
सो इस तरह की जो इक्वेशन हमारे पास आएंगी उनको हम रॉबिन्स और मिट्स बाउंड्री कंडीशंस कहेंगे. If the surrounding medium has a temperature of 0 degree centigrade, of course here is a degree missing, that is T of t is equal to 0 and U of ht is measured in degree centigrade, then we have, if T of t is 0, this T goes to 0, this goes to 0, then we have alpha of U 0t minus beta of U at 0t is equal to 0 and gamma of U of lt plus delta U of lt is equal to 0 for t is greater than 0. So what I am going to tell you, मैं आपको अगेन एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने UH लिया है, the derivative of U with respect to H. अगर मेरे पास दो स्पेस वेरिएबल होते हैं, जो एक और में एग्जांपल लेता है जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे मज़ीद डिटेल में जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, तो हम इन टू स्पेसिस में या थ्री स्पेसिस में हम बात करेंगे जब, तब आपको ये कन्फ्यूजन शायद दूर हो जाए. लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि U of H is exactly equal to UN here in this case when my normal is unit vector. When my normal is a unit vector. Now coming to superposition principle. What is superposition principle? We studied in the previous lecture that superposition principle is basically nothing but if we have two solutions U1 and U2 of a partial differential equations, then the linear combination of U1 and U2 is again a solution of that partial differential equation. So for superposition principles for linear boundary conditions, of course the superposition principle is valid only for linear boundary conditions. It is nothing to do with non-linear boundary conditions. Theorem: if U1 and U2 are the solutions of a linear homogeneous partial differential equation with linear boundary conditions, boundary conditions are written here: alpha U1 of H plus beta partial U1 of H over partial n. N is a this is basically gradient of U1 dot scalar dot with the unit normal vector at delta d is equal to f of H at delta d, and similarly the second equations for U2 of H. Where alpha beta are constants, then W is equal to U1 plus U2 is a solution of the partial differential equation that satisfies the boundary conditions. A alpha W of H, what is W? W is a summation of U1 and U2. So alpha W of H plus beta partial W of H over partial n at delta d is equal to f of H plus g of H at delta d. So we have to note that the above result is particularly useful in applications in which the boundary conditions are complex, which we will discuss in maybe in the last few lectures. Now इसी एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में लैप्लास इक्वेशन भी लेता हूँ. इसको हमने मॉडल करना है, लेकिन हम इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में हम इसको जाके मॉडल करेंगे. फिलहाल हम इसको एज इट इज लेते हैं. कंसीडर द लैप्लास इक्वेशन इन रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग लीनियर बाउंड्री कंडीशंस. U of H 0, यानी जब आपका हेयर लैप्लास इक्वेशन मुझे ये बता रहा है यहाँ पे कि U is a function of X and Y and both are space variables. So it's a two-dimensional problem. It's a two-dimensional problem. So the first boundary condition is going to tell me that U of X 0, यानी जब Y आपका 0 था तो आपका U जो है वो F1 of H था. And when U of H B, when Y is B, then it is F2 of H. Similarly, U of 0Y, when H is 0 and Y is any variable, then it's a very simple Laplace problem. Then आपका जो function था वो G1 of Y था and U of AY is equal to G2 of Y. So here it is explanation of this above, geometrical application of this above equations. That is, let's say this is F1 of H. Why this is I take F1 of H. So here you see that on this line Y is 0. Y is 0, but H is varying from 0 to A. So only this condition fits on here, that H is
variable, but y is 0. Y is 0 is here. And similarly, when x is 0 and y is varying, then this line is the most appropriate line. So u of 0 y is equal to g1 of x. G1 of x is on this side, and similarly f2 of x on this side and g2 of x on this side. Here you can see that x is varying, but y is fits with b. Y is fits with b, and here you can see that x is fixed, but y is variable here in this line. So what we do for this problem? Keep in the mind we are in the section of superposition principle of the boundary value problem. So what we should do, we break this problem into sub problems in two parts. In the first part, we take the Laplace equation with the variable u1, and in the second, Laplace variable with the variable u2. And here you can see that u1 of x0 is equal to f1 of x, and u1 of xb is equal to f2 of x. I take when y is fixed, then I refer the problem with u1, and when x is fixed, then I refer the problem with u2. In this figure you can see that I took these two boundaries for one solution and these two boundaries for another solution. So obviously if we solve u1 u2, अगर u1 इसका solution है and u2 इसका solution है, और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको application of superposition of principle of superposition बता रहा हूँ. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं. Obviously if we solve, if u1 is the solution and u2 is the solution of this thing and u1 is the solution of this thing, then u1 plus u2 is in some जो होगा is a solution of the Laplace equation which satisfies all the boundary conditions. So ये basically एक application थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की. यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो न्यूमन कंडीशंस होती हैं, ये आपका यूनिक सोल्यूशन ही प्रोवाइड करती है. उसकी एक एग्जांपल है, इसका स्पेशल नोट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इससे जो एग्जांपल है, लेट्स से वही हम लैप्लास इक्वेशन लेते हैं, और आपके लिए मैं यहाँ पे विद द न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस मैं ये बाउंड्री कंडीशंस ले लेता हूँ. पार्शियल u by partial y is equal to f1 of x, and partial u by partial y xb is equal to f2 of x, and partial u by partial x 0 of y is equal to g1 of x, and partial u by partial x is equal to, of course here if the bracket is missing, but if it is 0 then it is something like that, b of y or c of y is equal to g2 of x. So x is fixed here, but y is fixed here. So it is obvious that if u is the solution of this boundary value problem, then w is equal to u plus c, where c is a constant, is also a solution of the above boundary value problem. Why? Because c is a constant, and the derivative of c with respect to y, or the derivative of c with respect to x, is 0. And the double derivative of c is again 0. So w must satisfy this equation, this as well as all these 4 equations. So w is going to satisfy all these 5 equations. The one is the Rolling equations, और बाकी 4 जो हैं आपकी वो boundary conditions होगी. So लेकिन c तो constant है, और this means c हम कोई भी ले सकते हैं. So thus Newman boundary conditions determine the solution of this boundary value problem up to a constant. तो आपके पास constant, let's say मैं c को कभी 2 लेता हूँ, कभी c की वैल्यू 3 लेता हूँ, कभी c की 6 ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो solution होगा वो यूनिक नहीं रहेगा, एक solution नहीं आएगा. तो Newman conditions का ड्रॉबैक ये है कि ये आपको यूनिक solution प्रोवाइड नहीं करते रही. सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट इनिशियल कंडीशंस एंड अबाउट बाउंड्री कंडीशंस. मैंने एक एग्जांपल भी ट्राई आपको, और फिर हमने डिटेल डिस्कस किया कि व्हाट इज डिरिचलेट कंडीशन, व्हाट इज न्यूमन कंडीशन, एंड व्हाट इज द मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस
or Robin's boundary conditions. So now coming to the next topic, which is very important for which is the second part of our lecture, that is the formation of partial differential equation. How we formulate a partial differential equation. ये क्योंकि काफ़ी लेंथी इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैंने बजाय वहाँ पे करने की बजाय मैंने सोचा कि मैं हाथ से लिखूं, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. सो हम क्या करते हैं कि हम लेट्स से हम दो फंक्शन है u एंड v, कि हम फार्मूलेट कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को. पहले तो सवाल ये है कि लेट्स से u एंड v दो फंक्शंस हैं जिनके जो डिपेंड कर रहे हैं x, y और z तीन वेरिएबल्स के ऊपर. लेट्स से फॉर द मोमेंट वी आर एज्यूमिंग दिस कि u एंड v आर डिपेंडेंट ऑन x, y एंड z. सो f कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है u एंड v का, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है f of u v, or let's say in this way f of u x y z and v x y z. so इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है. मैंने ये लिखा है कि f एक फंक्शन है u एंड v का, और इस दूसरी फॉर्म में लिखा है f एक फंक्शन है u एंड v का, जबकि u फंक्शन है x y z का एंड v फंक्शन है x y z का. सो this differential equation must be equal to 0, f of u v is equal to 0. So a differential equation can be formulated by eliminating the arbitrary function f. How we eliminate, we will do in this these calculations. So मैंने डिफाइन दिया था कि f of u v is equal to 0, जबकि हम ये कहते हैं लेट्स से दिस फंक्शन f is equal to u f is equal to 0 when f is dependent on u and v, or u is a function of x, y and z and v is a function of x, y and z. So taking derivative to obtain the partial differential equations, what we should do, we take the derivative and पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्शियल डेरिवेटिव, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन u v. सो व्हेन मैं x के साथ लेता हूँ, इसको डेरिवेट करता हूँ व्हेन विद x, तो ये मुझे क्या दे रहा है कि पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ x f ऑफ u v इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स जीरो का डेरिवेटिव जीरो है. और यहाँ पे मैं एक चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस फार्मूलेट करनी है, तो ऑफ कोर्स मैंने f को एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको इस तरह कहता हूँ लेट्स से z इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ x एंड y. z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. z डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर भी, जबकि x और y आपस में इंडिपेंडेंट है. सो यहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रही होगी कि मैंने इस तरह से क्यों लिया. मैंने इंतहाई जनरल फॉर्म ली ताकि हम इन फ्यूचर जब भी कोई क्वेश्चंस लें तो हम उसको फ़ौरन इवेल्युएट कर सकेंगे. हेयर ये देखें f डिपेंड कर रहा है u एंड v के ऊपर, u डिपेंड कर रहा है x, y एंड z के ऊपर, और z जो है वो डिपेंडेंट है x और y के ऊपर. सो partial by partial x f of u v is equal to 0. When I take the derivative of this function, this gives me nothing but now I will use the chain rule. Partial f by partial, first of all I take the derivative with u, partial u, and then derivative of partial u with partial x and plus. Now u is a dependent of x, y and z. So again I have to take the derivative of partial u by partial x, partial u by partial y, and then partial y by partial x, then plus partial f by partial u by partial z, and partial z by partial x is equal to 0, not equal to 0 yet, because still a v is missing here. I have to take the derivative of v as well. So plus in the second line I will write partial f by partial v by partial x plus
partial f by partial v, partial v by partial y, and partial y by partial x, plus partial f by partial v, partial v by partial z, and partial z by partial h. Here why the third term is missing? Because partial h by partial h is 1. So this is equal to 0. So here in the beginning I said that y and h are independent. When y and h are independent from each other, then the derivative of y with respect to h is 0. So this goes to 0 and this goes to 0. So these two terms goes to 0. This implies partial f by partial u by partial h, plus partial f by partial u by partial y, plus partial f by partial u. This is because if this is 0, then this whole term is 0. So this whole term is 0. Partial f by partial u and partial u by partial z by partial h is plus partial f by partial v by partial h, f by partial v. Now I am writing this equation, partial v by partial z and partial z by partial h is equal to 0. So from this equation and this equation you can see that partial f by partial h u is common. So I am left with partial u by partial h plus partial u by partial z by partial h, and partial f by partial v, this is v, and partial v by partial h plus partial v by partial z and partial z by partial h is equal to 0. So now where I have to write from here, let partial z by partial h, because it is used too many times, so I write it in another name. Let's say this is small p. So this equation becomes partial f by partial u by partial h plus p partial u by partial z plus here partial f by partial v into partial v by partial h plus p partial v by partial z is equal to 0. So I will call this equation, the name of this equation is A, which is very important. So now this is derivative with respect to h only. So now we have to take the derivative with respect to y. Now taking different derivative with respect to y, taking derivative with respect to y yields partial f by partial y of u v is equal to 0. This is v. So by using chain rule we have, and of course by the derivative, u is a function of x, y and z. So first of all I will take partial u by partial h, here it must be h, and partial x by partial y, and now it is fine, partial u by partial y and partial y by partial y plus partial f by partial u by partial z, and then partial z by partial y, and the same thing is with partial f by partial v, the second term, this one, and partial f by partial v by partial h and partial h by partial y plus partial f by partial v by partial y by partial y plus partial f by partial partial v by partial z and partial z by partial y, and this is equal to 0. And
here this whole term goes to 0 and this term goes to 0 since x and y both are independent to each other. Now taking partial f by partial u is common from these two terms, so partial f by partial u is something like that, and partial y by partial y is equal to 1, so this is partial u by partial y plus partial u by partial z by partial y. Similarly, the second term partial f by partial v is common, so partial v by partial y plus partial v by partial z and partial z by partial y, this is equal to 0. Let, because partial z by partial y is used too many times, so I call it let q is equal to partial z by partial y. So my equation 2 becomes, so equation 2 implies partial f by partial u, and this is partial u by partial y plus partial q आ गया और partial u by partial z इधर आ गया plus partial f by partial v, partial v by partial y plus q partial v by partial z is equal to 0. So इसको मैं इक्वेशन b कहता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बजाय से बार बार प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाऊँ तो मैं इक्वेशन a और इक्वेशन b दोबारा लिखता हूँ. So my equation a is something like that, partial f by partial u into partial u by partial x plus partial u by partial z in and p plus partial f by partial v, this is the sign of plus, partial v by partial x plus partial v by partial z, and this is p again, and this is equal to 0. This is my equation a, I call it again a, and again then partial f by partial u, and this is nothing but partial u by partial y plus partial u by partial z, and here it is q plus partial f by partial u partial v by partial y plus partial v by partial z, and this is q again, and this is equal. So ये मेरी इक्वेशन b होगी. अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ पार्शियल f और पार्शियल u को, ठीक है. तो उसको एलिमिनेट करने का मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं उनमें से एक मेथड चूज़ करता हूँ. मैं इसको ये चूँकि लीनियर इक्वेशंस भी हैं तो मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ. तो उसका जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है f का वो नहीं होगा. और वंस माय फंक्शन f इज़ रिमूव्ड देन आई एम लेफ्ट विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो यहाँ से आप इसको देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ partial u by partial x plus partial u by partial z p, and the second term is partial v by partial x plus partial v by partial z p, and this is small p, of course this is small p, and partial u by partial z y plus partial u by partial z q, and this is partial v by partial y plus partial v by partial z q. This is a matrix of 2 cross 2, and if I wrote here partial f by partial u and partial f by partial v, then you can see that we can, if we multiply this matrix, then we can have a and b again. And to eliminate f and from here, I simply take the determinant of this function, determinant of this matrix. So what is the determinant? Determinant, and I know, मैं जानता हूँ कि आपको आता है,
आपने बहुत पहले जब हम मैट्रिक में थे तो हमने डिटरमिनेंट लेना सीखा था, अब हम जस्ट उसे अप्लाई कर रहे हैं। P पार्शियल v बाई पार्शियल h प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल z P एंड देन पार्शियल u बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल z, दिस इज q, एंड देन पार्शियल v बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल z, दिस इज q इज इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट लेने का मतलब यह है कि मैंने इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और माइनस दीज टू टर्म्स, मतलब ये होल टर्म, ठीक है, सिर्फ एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों को करना है। तो कैसे करेंगे हम, जस्ट राइटिंग डाउन हियर पार्शियल u बाई पार्शियल h प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल z p इंटू पार्शियल v बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल z q माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल z q इंटू पार्शियल v बाई पार्शियल h प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल z p, एंड दिस इज इक्वल टू 0। Simplifying this equation, so I am writing again this equation which I wrote previous because I just not remember. So partial u by partial h plus partial u by partial z p into partial v by partial y plus partial v by partial z q minus partial v by partial h plus partial v by partial z p into partial u by partial y plus partial u by partial z q is equal to 0। So अब मैं जस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ और आप यहाँ से देख सकते हैं इस टर्म को पहले मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो पार्शियल u बाई पार्शियल h एंड पार्शियल v बाई पार्शियल z q, मैंने इसको पहले कर दिया प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल h पार्शियल v बाई पार्शियल y प्लस नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद दिस p पार्शियल u बाई पार्शियल z partial v by partial y plus pq partial u by partial z partial v by partial z and then minus sign partial v by partial h partial u by partial y minus partial v by partial h partial u by partial z q minus partial v by partial z partial u by partial y p minus pq partial u by partial z partial v by partial z, and this is nothing but equal to 0। so यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को बिकॉज ये दोनों जैसी हैं। सो अब Q वाली टर्म के साथ Q को कॉमन लेंगे और जो Y वाली टर्म है उनके साथ Y को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैं Q को कॉमन लेता हूँ, Q इज इक्वल टू नथिंग बट पार्शियल U बाई पार्शियल H पार्शियल V बाई पार्शियल Z माइनस partial v by partial h partial u by partial z, then p common partial u by partial z partial v by partial y minus partial v by partial z partial u by partial y, or then last term minus partial u by partial h partial v by partial y
sorry, this is plus here, minus partial v by partial x and then partial u by partial y and दिस इज इक्वल टू 0। हमें बुट के साथ टैली करने के लिए जो मैंने बुट सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड बुट्स बताई हैं पहले लेक्चर में, संटारा राउ की बुट, उसमें इसको मज़ीद डिटेल के साथ किया गया है। तो उसके आंसर्स के साथ या उसके फार्मूलेशन के साथ टैली करने के लिए मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो दिस इज़ नथिंग बट लेट्स से फर्स्ट टर्म में लिखता हूँ पी की, पी इज इक्वल टू पार्शियल वी बाई पार्शियल जेड and partial u by partial y minus partial u by partial z partial v by partial y plus q partial v by partial x partial u by partial z minus partial u by partial x and partial v by partial z and then plus this comes again partial v by partial x, this is we take on the other side, this is equal to partial u by partial x and partial v by partial y minus partial u by partial y partial v by partial x. So नाउ इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन का नाम मैं सी रख देता हूँ और इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इसको इस होल टर्म को कैपिटल पी से ज़ाहिर करूँ, इस होल टर्म को मैं कैपिटल दिस होल टर्म इज़ बाई कैपिटल क्यू एंड दिस होल टर्म इज़ बाई कैपिटल आर, देन माई इक्वेशन सी बिकम्स PP plus QQ is equal to R, equation D. So my P is basically nothing but P is equal to partial U by partial Y partial V by partial Z minus partial U by partial Z partial V by partial Y, and my Q is equal to partial V by partial X partial U by partial Z minus partial U by partial X partial V by partial Z. So here and R, of course I have to write partial U by partial X and partial V by partial Y minus partial U by partial Y partial V by partial X. और अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूं कि पार्शियल ऑफ यू वी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ u is y, so this is yz and this is partial of uv partial of zx, yes, and this is partial of you can see that the derivative of u with respect to z, so I put the z before below the u and x below the v and y below the u and z below the v, and this is partial u v and this is equal to partial over x y. So here from this equation can be written in the determinant form in this way, that P is equal to partial of u v over partial of yz. This is equal to nothing but partial u by partial y and partial v by partial y, and this is partial u by partial x and this is partial v by partial z. So this is P, this is Q, partial v by partial x, partial of u v is equal to partial of zx, this is equal to nothing but partial u v over partial zx. So we can write partial u by partial z. Here is partial u by partial x and partial v by partial z, and then partial u by partial
h and then partial v by partial h. Similarly, our r is something like that, partial uv over partial xy, and this is equal to, I wrote it here, partial u by partial x, partial v by partial x, and partial u by partial y, partial v by partial y. Here is a symmetry. There is no need, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ज़बानी याद करने की या कोई इस तरह का कोई मसला नहीं। ये देखें इसमें सिमेट्री है, जो P, Q और R आपने कैसे लिखना है। P इज पार्शियल U V और पार्शियल Y Z। सो U क्या है? U एक्स और वाई का फंक्शन है, Z का फंक्शन है। तो आपने जब इसको इस अंदाज से लिखा है तो U का डेरिवेटिव Y के साथ और फिर V का डेरिवेटिव Y के साथ, देन U का डेरिवेटिव Z के साथ एंड देन V का डेरिवेटिव Z के साथ। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपने z पहले लिखा है, तो जिसको पहले लिखा है उसका पहले डेरिवेटिव लें, u का डेरिवेटिव z के साथ, v का डेरिवेटिव z के साथ, और यहाँ पे आप देख लें u का डेरिवेटिव h के साथ और यहाँ पे v का डेरिवेटिव h के साथ। सिमिलरली यहाँ पे आप ये देखें कि पार्शियल u बाई पार्शियल x एंड पार्शियल v बाई पार्शियल x एंड देन पार्शियल u बाई पार्शियल y एंड पार्शियल v बाई पार्शियल y। सो जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी कि p प्लस Q is equal to R, इसको हम लेंग्रांज इक्वेशन भी कहते हैं जी, लेंग्रांज इक्वेशन जी, अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जी, ठीक है। नाउ मैं इसे कोई एग्जांपल लेता हूँ और सिर्फ इसकी नहीं बल्कि दो एग्जांपल्स में लेता हूँ, और इसके लाजमी नहीं है कि आप इसी मेथड को फॉलो करें। आपने जस्ट करना क्या है कि आपने आपका जो फंक्शन है f उसको एलिमिनेट करना है किसी भी अंदाज से। ये उस सूरत में करना है जब आपके पास इक्वेशन इस शेप में दी गई हो कि f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 की शेप में, देन आपको इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। अदरवाइज बाय हुक और क्रूक आपने जस्ट अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसे इवॉल्व करना है। याद रखें कि लेंग्रांज इक्वेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर पीडीई के लिए है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए जी। सो लेट्स से एक एग्जांपल में लेता हूँ कि z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस आयोटा t प्लस g ऑफ x माइनस आयोटा t, जबकि आयोटा ऑफ कोर्स -1 स्क्वायर रूट है। ये एक फंक्शन है z की फॉर्म में, z डिपेंडेंट है h और t के ऊपर। आपने इसकी मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन इवेल्युएट करनी है। तो मैं इसका जरा डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू h। तो पार्शियल z बाई पार्शियल h इज नथिंग बट f डैश ऑफ x प्लस आयोटा t एंड देन पार्शियल ओवर पार्शियल h प्लस आयोटा t। देखिए मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि डेरिवेशन आपको सही आनी चाहिए, और कुछ डेरिवेशंस मैंने करके भी आपको दिखाई थी। अगर स्टिल आपको कोई इश्यूज हैं डेरिवेशंस के ऊपर तो काइंडली अपने बैचलर्स बुक्स उठाएं और उसमें डेरिवेशंस से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जब भी आप किसी फंक्शन को डेरिवेट करते हो तो उसके आर्गूमेंट को भी डेरिवेट करते हो, ठीक है। प्लस जी डैश ऑफ एच माइनस आयोटा टी, डैश मीन्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप जी डैश लिखो या पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स लिखो, एक ही बात है। मैं इसको आपके सहूलत के लिए पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स लिख देता हूँ ताकि हमें मसला ना हो। और देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस आयोटा टी। सो इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1 है। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स प्लस आयोटा टी एंड प्लस partial g by partial h minus iota t. This is nothing but partial g by partial h. आप इसको डबल डेरिवेट करोगे, डबल डेरिवेटिव मीन्स आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू h अगेन, तो आप ऑफ कोर्स ये आ जाएगा पार्शियल टू f बाई पार्शियल h स्क्वायर ऑफ h प्लस आयोटा t। और इससे आर्गूमेंट का आपको पता है कि डेरिवेटिव 1 है, तो मैं उसको नहीं लिख रहा, जरा थोड़ी सी मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पेज के ऊपर हमारा सवाल हल हो जाए। सो इसको मैं इक्वेशन ए कहता हूँ। लेट्स से इक्वेशन ए में कह चुका हूँ, तो लेट्स से इसको मैं इक्वेशन डी कहता हूँ जी, ठीक है।
So similarly partial इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल जी बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे मैं इसको एफ और जी को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ किसी भी तरह से, कि मेरा फंक्शन जो है वो एफ जो है वो एफ और जी दो अननोन फंक्शंस हैं, उनको मैं एलिमिनेट कर दूँ और जेड में इक्वेशन में लिख लूँ। पार्शियल जी बाई पार्शियल टी ये आएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल टी एंड पार्शियल बाई पार्शियल टी एच प्लस आयोटा टी प्लस partial f by partial t h plus iota t of course, and then derivative of partial over partial t h plus iota t. So from here you can see that the derivative of h with respect to t is 0 and I am left with only iota. So this is iota partial f by partial t plus iota partial f by partial t. Sorry, this is g. So this is g. So this is g. This is partial z by partial t. Now taking the double derivative gives me here iota partial 2f over partial t square plus and the derivative gives me iota plus iota into partial f by partial g by partial t square, and again I get the iota. This is equal to nothing but partial 2z by partial this is equal to partial to f by partial t square minus of iota into iota, iota square is equal to minus 1, and this is partial to g over partial t square. Taking minus common, so this gives me partial to f over partial t square plus partial to g over partial t square. You can see that D and this is E. Our equation D and E, the right hand sides of equation D and E are equal. Are not. They have the difference of minus 1. Adding D and E gives me partial to z over partial h square plus partial to z over partial t square is equal to 0, which is a Laplace, which is again a partial differential equation. This is a PDE, and we actually what we want to formulate a differential equation. So this is one example. In our second example, now I used the method of Lagrange equation which was used there. So let's say f of the function is y plus z and h square plus y square plus z square. So here is u is equal to h plus y plus z. This is equal to 0. From this function I have to formulate a differential equation. Here this is u and this is v. So v is equal to h square plus y square plus z square. So this is basically in the exact form which we read in detail, that is f of u v is equal to 0. So what we need only to calculate capital P, capital Q and capital R. If we have all these things, then we just plug these things in the equation and get the answer. So what is capital P? Capital P is partial u v over partial y z. This is equal to nothing but partial u by partial y, partial v by partial y, and this is partial y, partial u, sorry, this is u, partial u by partial z and partial v by partial z. So partial u by partial y, partial u by partial y, this is 1. The derivative of y with respect to y is 1. Partial v by partial y, partial v by partial y is 2y. And here partial u by partial z is again 1 and partial v by partial z is again 2z, and on simplifying this gives me 2 into z minus y. Similarly, q
is equal to nothing but partial uv over partial zx, which is nothing but partial u by partial z and partial v by partial z and then partial v by partial u by partial h and then partial v by partial h, and this is equal to 1 partial u by partial z, this is u, derivative of u with respect to z is 1, and partial v by partial z, this is 2z, 2z is here, and 1 into, then here is 2h, partial v by partial h is 2h, so it gives me 2 into 2h minus 2z, and this is equal to 2 into h minus z. So similarly r is equal to nothing but, it's your assignment to calculate 2 into y minus h. So what we need to do is we have just to we need to plot this equation in this Lagrange equation, which is p plus q is equal to r. This is the Lagrange equation. So on substituting, let's say this is EF or EFIJ, this is, let's say, F. So putting in F, equation F gives me equation F implies P is 2 into z minus y p plus 2 into h minus z q is equal to 2 into y minus z, and dividing by 2 we are left with a differential equation. So the dear students, आज हमने 2 एग्जांपल्स की, इसमें मैं एक दी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में भी आपको कराऊंगा, और लेकिन जो मेरी स्लाइड्स हैं, मैंने स्लाइड्स में 5-6 इक्वेशंस लिखी हैं, ये आपका होमवर्क है, इट्स नॉट एन असाइनमेंट, ये आपका होमवर्क है, आप इनको कीजिएगा, और आई ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग इन नेक्स्ट लेक्चर एज वेल जी, ठीक है। और इनके सोल्यूशंस भी मैंने आगे लिखे हैं, आपको इन सोल्यूशंस तक आना है जी। जस्ट आपने क्या करना है, एफ को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे भी एफ को एलिमिनेट करना है, और यहाँ पे आपने किसी अंदाज से इस इक्वेशन को यहाँ पे इसमें टर्न में लाना है। सो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जी, और आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी उनकी समरी में आपको बता देता हूँ कि हमने बेसिकली आज इनिशियल कंडीशंस को देखा, बाउंड्री कंडीशंस को पढ़ा, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ ए बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को देखा, लीनियर बाउंड्री कंडीशंस स्टडी की, क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस इन विच डिरिचलेट कंडीशन, न्यूमैन कंडीशंस, मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस को हमने डिटेल से देखा। फिर हमने एक ऐसी एग्जांपल दी जिसमें इन तीनों चीज़ों को हमने कवर किया। फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ा, बाउंड्री कंडीशंस पढ़ा, एंड देन in the end of the lecture we discuss the formation of the partial differential equations. So thank you very much. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.